So as we all know, the provisional date of the NEET PG has been announced and the date is 15th of June 2025. So from today onwards, आपके पास 6 months हैं to prepare for the exam. And trust me, 6 months are enough to prepare for any competitive exam. अगर आप आज भी पढ़ना शुरू करते हो ना, you can definitely clear the exam. So when I was in 11th and 12th, one of my school teacher used to say कि with the same level of preparation, if you are going to the exam center with the confidence that you can clear the exam, there is high probability that you can clear the exam. And with the same level of preparation, if you go to the exam center with the thoughts that maybe you are not prepared well or something, there's less chance that you will succeed. Even though in both the scenarios you will be having same level of preparation. And similarly, what I have learned during my journey of MBBS and MD is overconfidence is always better than underconfidence. So now since you are starting preparing for the NEET PG, trust me, if you are overconfident for your preparation, if you think that you are prepared well, you will definitely going to succeed. And at the same time, if you keep on thinking I have not studied in the undergraduate time or I am not prepared well, there is less chance that you will succeed. So stay confident, think that you can achieve it. Now coming on to the preparation journey, since you have 6 months from now, तो अभी आप में से बहुत सारे लोग फर्स्ट रिविजन के फेज में होंगे. यू विल बी प्रिपेयरिंग नोट्स बाय सीइंग द वीडियोस. तो कंटिन्यूइंग विद दैट पार्ट, अभी टेक योर टाइम. अभी 2 महीने और यू कैन टेक, और इवन इफ यू आर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग नाउ, टेक 2 months ऑफ टाइम. नोट्स बनाओ अच्छे से, सी द वीडियोस. ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली गो टू द नोट्स, बिकॉज हर रिविजन के अपने इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है दैट विल डिस्कस, सेकंड की क्या रिवीजन है, एंड सब्सिक्वेंट की क्या इंपॉर्टेंस है. तो जैसे ड्रग्स के ट्रायल्स होते हैं फेज 1 फेज 2, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, वैसे सारे रिवीजन की अपनी इंपॉर्टेंस है. द फर्स्ट रिवीजन दैट यू आर डूइंग इन विच यू आर प्रिपेयरिंग द नोट्स, उसमें यू आर बिल्डिंग योर कंसेप्ट. तो 50% मार्क्स आपके यहाँ सिक्योर हो जाएंगे. जो भी कंसेप्चुअल चीजें हैं यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में 50% क्वेश्चन विल बी कंसेप्चुअल, 50% विल बी ऑन द मेमोरी बेस्ड. तो 50% क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाने चाहिए, एंड वो आपको वीडियो देख के ही समझ आएगा. एमबीबीएस में किसी ने भी इतना अच्छे से नहीं पढ़े होते सारे टॉपिक्स. यू हैव टू सी द वीडियोज, यू हैव टू बिल्ड योर कंसेप्ट. इवन इफ अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग पहले अटेंड करी है एंड इस टाइम यू आर जस्ट रिवाइजिंग द नोट्स, तो वही ऑफलाइन कोचिंग दोबारा जाओ एटलीस्ट, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यू अपडेट्स जो वो पढ़ाएंगे. तो ट्राई टू कंप्लीट द नोट्स बाय सीइंग द वीडियोज और ज्वाइनिंग द कोचिंग. टेक योर टाइम, क्योंकि यही पॉइंट है जहाँ पे 50% कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस ठीक होंगे. सब्सिक्वेंट रिवीजन में ट्रस्ट मी इतना टाइम नहीं होगा, इतना पेशेंस नहीं होगा दैट यू कैन बिल्ड योर कंसेप्ट. तो ट्राई टू गिव इनफ टाइम इन दिस फर्स्ट रिवीजन, ट्राई टू बिल्ड योर कंसेप्ट. इस टाइम पे रटने वाली चीज़ें यू कैन स्किप. सपोज कोई क्लासिफिकेशन है, सपोज कोई कैंसर की ग्रेडिंग है, यू कैन स्किप दैट. मतलब यू कैन रीड इट एंड स्किप इट कि मैं इसको बाद में रट लूंगा. बट फर्स्ट रिवीजन में यू शुड बिल्ड योर कंसेप्ट, एंड अलॉन्ग विद इट आई वुड रियली रिकमेंड कि आप फर्स्ट रिवीजन में, सिंस यू आर डूइंग इट स्लोली, ट्राई टू प्रैक्टिस क्यू बैंक. सपोज आई एम टेकिंग 7 days फॉर मेडिसिन, तो मेडिसिन की वीडियोस देखो, नोट्स बना, ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑल्सो. सो विल गेट टू नो कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उनमें से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं. so that you can get to know कि which part is important, which part is less important. एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ अब आप सब्सिक्वेंट रिवीजन में योर माइंड विल कैच अप द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं. ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन दिस टाइम ओनली, क्योंकि वैसे भी इन सब्सिक्वेंट रिवीजन यू विल बी हैविंग लेस टाइम, तो आप क्वेश्चंस इतने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी कर पाओगे. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड रिवीजन, जब ये 2 months खत्म हो जाएंगे एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योर नोट्स, यू हैव रिवाइज्ड वंस, यू हैव सीन द वीडियोस, यू हैव बिल्ड द कंसेप्ट. नाउ after 2 months, when you will be left with 4 months, this is the time of second revision. Now the importance of second revision is to know which things are important, which things are volatile जो आप बार बार भूल रहे हो, and revising the things. So second revision में क्या करना है, start your second revision, keep the 20th copy with you and solve PYQs. तो second revision में क्या करना है कि take 2 months again for the second revision, revise your notes, keep a copy with you and make your 20th copy. जो भी volatile चीजें रख ली है, shift it in the 20th copy, and इसी रिवीजन में try to solve the PYQs. So you will come to know कि कौन से questions previous year में आ चुके हैं. The second revision is important for summarizing things. First is for building concepts, and from second revision onwards
you should start giving GTs. तो जब आपका second revision start हो जाता है, you should start giving GTs at least once in a week or once in 10 days. Now जब आपका second revision खत्म हो जाएगा, you will be left with 2 months, and in these 2 months you have to do 2 revisions of 1 and 1 month each. So 1 months के 2 revisions. So we have divided this structure into current situation से 2 months तक first revision with completing your notes and seeing the videos, then again 2 months for revision जिसमें you will prepare the 20th copy too and start giving GTs, then 1 month के 2 quick revisions, and these quick revisions are just for consolidation कि you are consolidating your 19 subjects, you are revising it, along with it you should revise your 20th copy, and side by side आपके GTs you should keep on giving. So this is the whole structure. You should, during first revision you should prepare your notes and you should solve some MCQs. During second revision you should start giving GTs, make your 20th copy and keep on practicing PYQs. And during third and fourth revision just consolidate your notes, just summarize your notes, just revise them, along with keep on giving GTs, and whenever you get time solve some questions. So this is the whole structure, and in the exam time, like 7 days before the exam, try to revise the 20th copy as much as you can. So for any exam you need some basic things, you need some good concepts, and you need this memory based questions you should remember. So in the first revision try to cover that concept based thing, and in subsequent revisions try to focus on the volatile part, and you can definitely succeed. So you will cover these volatile things and you will cover those concept based things. Along with that you will practice the GTs so that you will come to know how to manage the time, how to decrease your silly mistakes, and while solving PYQs you will come to know what things are important and what are not. So by focusing only on these some basic things you can definitely clear any exam. But हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि I am reading from this source and someone is reading from that other particular source, so I should read that, and we just skip our part. और हम फोमो में इधर उधर भटकते रहते हैं, and we never focus on the basics. For clearing an exam, you just focus on the basics and you will definitely clear that exam. All the best.